हेलो एवरीवन। आज आम जीके रो 200 MCQs प्रैक्टिस करवा। सिलेबस अनुसार आपनकर प्रश्न रही ट्राई करंतु फॉर योर एग्जाम SSB जूनियर असिस्टेंट एंड क्लर्क। आपण एही PDF नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रो डाउनलोड करि परिबे। एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु। ओके, ट्राई करवा। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर? व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर? मौर्य साम्राज्य को किए प्रतिष्ठा करथिले? चंद्रगुप्त मौर्य होइजो राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक अछि, ऑप्शन ए समस्त चूज करिसंती। चाणक्यंक सहायतारे धनानंदंकु परास्त करी चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य प्रतिष्ठा करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया? Which is the longest river in peninsular India? माने जो दक्षिण भारत रो कथा कुआ जाउची। उपद्वीपीय भारतर दीर्घतम नदी जहाको दक्षिण गंगा मध्य कुआ जाय, गोदावरी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करबा। क्वेश्चन नंबर 3, द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री? मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान रो जो पार्ट 3 रे रही मौलिक अधिकार को अमेरिका रो संविधान रु अडॉप्ट करा जाइछि। USA इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को एस्टैब्लिश करा जाइतला? केउ मसिया रे भारतीय रिजर्व बैंक RBI को प्रतिष्ठा करा जाइतला? 1935 मसिया रे। ऑप्शन डी होइछ राइट आंसर। ठीक अछि, 1935 मसिया एप्रिल मास 1 तारिख रे भारतीय रिजर्व बैंक रो प्रतिष्ठा हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करबा। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट रो SI यूनिट कोन? इलेक्ट्रिक करंट रो SI यूनिट होची एम्पियर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एम्पियर मन रखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which vitamin is chemically known as ascorbic acid? ascorbic acid ट्राई करबा। क्यों विटामिन रासायनिक नाम होची ascorbic acid? विटामिन सी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक अछि, विटामिन सी रो केमिकल नेम होची ascorbic acid। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करंतु। Which gas is commonly known as laughing gas? Laughing gas how को जाय? N2O को means nitrous oxide को कौन को जाय? laughing gas को जाय। N2O is your right answer. Next, Bharatanatyam is a classical dance form originating from which Indian state? कोंतु भारतनाट्यम होचे एक शास्त्रीय नृत्य belongs to तमिलनाडु। ऑप्शन बी होइज राइट आंसर। तमिलनाडु रो एहा होचे एक प्रसिद्ध नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन व्हिच ईयर? कोंतु पलासी युद्ध केउ मसिया रे लड़ा जायतला? 1775 1757 रे। ऑप्शन डी 1757 मसिया रे बैटल ऑफ प्लासी को लड़ा जायतिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज रेड प्लैनेट? निम्नलिखित मध्यरु केउ ग्रह को लाल ग्रह कुहा जाय? बिकॉज सेई ग्रह रे आपण आयरन ऑक्साइड पाइबे। दिस इज आपनकर मार्स। मंगल को कोन कुहा जाय? लाल ग्रह कुहा जाय, रेड प्लैनेट कुहा जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करंतु। Who is the ex officio chairman of राज्य सभा? राज्य सभा रो जो पदस्थ अध्यक्ष किए अटंती? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत रो उपराष्ट्रपति होचंती राज्य सभा रो अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, the 5-year plans
in India were largely inspired by the planning model of which country? भारतर पंचवार्षिक योजना USSR सोवियत यूनियन रो योजना एही मॉडल रु प्रभावित होइछि भारतीय जो पंचवार्षिक योजना करेंटली कोन एटा भी रिप्लेस हो जाइछि नीति आयोग रे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 the speed of light in vacuum is approximately कोंतु शून्य रे आलोकर वेग होछि 3 into 10 to the power 8 meter per second option C is your right answer question number 14 try करंतु which organ cell is known as the powerhouse of the cell ATP आपनकर कोन करे जो उत्पन्न करे ATP को माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन बी हुई राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ एटीपी उत्पन्न करुथिबारु एहाकू कोन कुआ जाय कोशर पावर हाउस शक्ति केंद्र कुआ जाय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करबा व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन टेबल सॉल्ट साधारण खाइबा लूण रो रासायनिक सूत्र होची सोडियम क्लोराइड NaCl ऑप्शन D is your right answer. Next, the famous Konark Sun Temple is located in which state? Odisha re roichi. Okay, Odisha re roichi Konark Surya Mandir. Next, who among the following freedom fighters was known as the Frontier Gandhi? Frontier Gandhi भाବରେ किए जाना जानती? Frontier Gandhi भाବରେ किए जाना जानती? Khan Abdul Ghaffar Khan. Option C होइज right answer. Khan Abdul Ghaffar Khan Frontier Gandhi भाବରେ जाना जानती. ठीक है नेक्स्ट which is the largest brackish water lake in India ओडिसा रो केउ हृद होउची सर्वबृहत्तम लवणाक्त हृद गोटे चिल्लिका हृद सेटा चिल्लिका हिजो राइट आंसर फ्रेश वाटर लेक होउची उल्लूर लेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करंतु according to the constitution the minimum age required to become the president of India minimum age केते 35 years ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर 35 years भारतर राष्ट्रपति हेबा पई सर्वनिम्न बयस 35 वर्ष हेबा आवश्यक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 which institution act as the lender of last resort in the Indian banking system रे अर्थात कोन प्रश्न को जाउची जो संकट समय रे बैंक गुडी को जे ऋण जोगाउ थाए दैट्स व्हाई lender of the last resort RBI को कहा जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन बी हुई इज राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मन रखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच डिवाइस इज यूज्ड मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय चाप मापिबा पई बारोमीटर को व्यवहार करा जाए ऑप्शन सी हुई इज राइट आंसर बारोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 the process by which green plants make their own food is called क्यों प्रोसेस रे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे सूर्यालोक को जो व्यवहार करी सबुज उद्भिद कोन करिवो तार खाद्य तयारी करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 which of the following highly reactive metals is kept in kerosene oil to prevent it from catching fire try करंतु which option is your right answer सोडियम इज योर राइट आंसर सोडियम होचे एक अत्यंत प्रतिक्रियाशील हेउथिबारु एहाकू केरोसिन तेल रे रखा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बिहू इज ए पॉपुलर फोक डांस फॉर्म ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट असम इज योर राइट आंसर असम रो गोटे लोक नृत्य होची बिहू असम रो लोक नृत्य नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विषय जदि कथा बा लॉर्ड माउंटबेटन हेबे की ऑप्शन डी होइज राइट आंसर जदि हमें प्रश्न रहइबो प्रथम भारतीय के देन श्री राजगोपालाचार्य नेक्स्ट व्हिच माउंटेन पास कनेक्ट श्रीनगर विथ लेह ऑन नेशनल हाईवे 1 श्रीनगर को लेह सहित कनेक्ट करूथबा माउंटेन पास गिरिपथ होची जजिला पास ऑप्शन बी योर राइट आंसर
Next question number 27 try करंतु. Which article of the Indian Constitution deals with abolition of untouchability? Article 17 was your right answer. Article 17 रे कौन वर्णना करा जाइछि? अस्पृश्यता को जो निवारण से संपर्कित होछि एई आर्टिकल 17. Next, the goods and service tax GST in India was officially implemented on which date? GST को क्यों हाँ यस GST को क्यों डेट रु कार्यकारी करागला 2017 जुलाई मास 1 तारिख रु GST को कार्यकारी करागला. ऑप्शन डी होइज राइट आंसर. नेक्स्ट, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू. साउंड वेव्स शब्दर जो तरंगर गति रही यहाँ कहा दे वैक्यूम दे की ट्रैवल करि परिबो नाही. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. साउंड वेव को ट्रैवल करबा पई कोनोसी ना कोनोसी गोटे माध्यम आवश्यक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. Which blood group is known as the universal donor? Universal donor होची O नेगेटिव. Universal donor ठीक अछि माने जो समस्त को ब्लड दिया जाय परिबो O नेगेटिव. नेक्स्ट, which non metal is an excellent conductor of electricity? क्यों नॉन मेटल हिजबो क्यों अधातु ग्राफाइट. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर ग्राफाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. The famous Khajuraho group of monuments is located in which state? खजुराहो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूह मध्य प्रदेश रे आपनकर अवस्थित. ऑप्शन डी होइज राइट आंसर. नेक्स्ट, द ट्रेजिक जालियानवाला बाग मास्कर्स टुक प्लेस इन व्हिच ईयर? 1919 मसीहा रे आपनकर एप्रिल मास 13 तारिख मन रखंतु 1919 एप्रिल 13 तारिख रे अमृतसर ठारे जालियानवाला बाग रे हत्याकांड घटिथिला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्रोसेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट? 8टी भारतीय राज्य देखि यह पास करूछि. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 ट्राई करिवा. द नॉर्मल टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्य सभा इज 6 वर्ष थाए ना 6 वर्ष कि नो 6 वर्ष हो राइट आंसर. राज्य सभा जो सदस्यों कार्यकाल केते 6 years. नेक्स्ट, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड प्राइमरीली टू प्रमोट. नाबार्ड को कोथि पई प्रतिष्ठा करा दितला? कृषि ओ ग्रामीण विकास पई गोटे शीर्ष बैंक भाबरे काम करूची नाबार्ड. मीन्स रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर इज राइट आंसर. नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर समस्त चूज करिसंती. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. What is the standard SI unit of frequency? Frequency रो SI unit कौन हिजबो? Frequency रो SI unit होची hertz. Option A is your right answer. Next, which hormone is primarily responsible for regulating blood sugar levels in the human body रे? क्यों इंसुलिन. इंसुलिन रो काम कोन? इंसुलिन हार्मोन शरीर रे जो हमर जो ब्लड सुगर जाको शर्करा कहा जाए यार परिमाण को से कंट्रोल करे नियंत्रण करे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस ऑफन कॉल्ड गोबर गैस यार मुख्य उपादान कोन? मीथेन. ऑप्शन सी होइज राइट आंसर. बायोगैस रो मुख्य उपादान होची मीथेन CH4. नेक्स्ट, कुचुपुड़ी इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम व्हिच स्टेट? कुचुपुड़ी गोटे शास्त्रीय नृत्य belongs to Andhra Pradesh मन रखंतु. ऑप्शन डी होइज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. who founded the ब्रह्म समाज in 1828 रे? ब्रह्म समाज को किए प्रतिष्ठा करथिले? ब्रह्म समाज को प्रतिष्ठा करथिले राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज को प्रतिष्ठा करथिले. नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 42. which is the smallest continent in the world in terms of land area? ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया होची सबुठारु कोन क्षुद्रतम महादेश. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. which schedule of the Indian Constitution contains the list of official recognized languages? केउ शेड्यूल केउ अनुसूची रे 8th शेड्यूल रे वर्णना करा देछि 22 टी भाषा रहिछि ऑफिशियल भाषा. नेक्स्ट,
Who is widely considered the father of modern economy? Father of modern economy होचंती Adam Smith. Adam Smith से क्यों पुस्तक रचना करथिले कमेंट सेक्शन रे जणाइब. Next, the phenomenon of splitting white light into its 7 component color is called. याकु कोन कहा जाय धळा आलोकरु 7टी रंगर जो कलक कोन हो बिच्छुरित हबो याकु बिच्छुरित कहा जाय मींस this person कहा जाय. ऑप्शन ए हबो हेर राइट आंसर. Next question number 46. What is the largest gland in the human body? Largest gland कौन है जो human body रो? Liver. Liver होची माने यकृत मानव शरीर रो सबुठारु बड़ ग्रंथि. Next question number 47. Which naturally occurring substance is the hardest on earth? हीरा. हीरा पृथ्वी रे सबुठारु कठिन प्राकृतिक पदार्थ अटे. So diamond is the right answer. Next question number 48 try करंतु. Satriya is a recognized classical dance form from which state? Satriya होची एक शास्त्रीय नृत्य belongs to Assam is your right answer. Next, who founded the प्रार्थना समाज in Bombay 1867? प्रार्थना समाज को किए प्रतिष्ठा करथिले? प्रार्थना समाज को किए प्रतिष्ठा करथिले कहंतु. 1867 मसिया रे आत्माराम पंडुरंग प्रार्थना समाज को प्रतिष्ठा करिथिले. नेक्स्ट, which Indian state has the longest mainland coastline? गुजरात रो coastline सबुठारु दीर्घतम coastline. Next, who is known as the father of Indian constitution? Dr. B.R. Ambedkar से होचंती father of Indian constitution. ठीक अछि संविधान रो जनक. नेक्स्ट, which is the longest bone in the human body? Human body रे थिबा longest bone होची कोन सेटा जो आपनकर कान रे रहिछि एपिस मन रखंतु. सॉरी, longest bone कथा को जाउछि. दिस इज स्मॉलेस्ट bone इज जो स्टेपिस. longest bone कोन इजबो femur. एटा आपनकर जो जंघ रे थाए मो एटा देखि कहै. smallest bone नो longest bone. smallest bone इजबो स्टेपिस. ऑप्शन सी राइट. smallest bone कोन स्टेपिस, longest bone femur. एटा आपनकर जंघ रे थाए एटा कान रे थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 ट्राई करंतु. Which is the largest hot desert in the world? World रो largest hot desert सहारा मरुभूमि. ऑप्शन डी होई जबो राइट आंसर. सहारा डेजर्ट. नेक्स्ट, what is the official currency of Japan? जापान रो official currency कोन? येन. ऑप्शन ए येन हे जो. ओके, युआन होची चीन रो. नेक्स्ट, who was the first woman president of India? प्रथम महिला राष्ट्रपति होचंती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल. ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया विषय कथा बा बेंगल टाइगर. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? इंडियन पीकॉक. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. हु कंपोज्ड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन? ये कंपोज करथिले याकू किए रचना करथिले? रविंद्रनाथ टैगोर. ऑप्शन ए होइज बा राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 ट्राई करंतु. हु रोट फेमस सॉन्ग वंदे मातरम व्हिच वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? वंदे मातरम को किए रचना करथिले? बंकिम चंद्र चटर्जी रचना करथिले वंदे मातरम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 ट्राई करिवा. व्हिच इज द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच इन द वर्ल्ड? डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच. दिस इज मरियाना ट्रेंच. विश्वर सबुठारु गभीरतम सामुद्रिक गोटे ट्रेंच अटे मरियाना ट्रेंच. ऑप्शन सी होइज बा राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड रो हाईएस्ट माउंटेन पीक निम्नलिखित मध्यरु केउटा? माउंट एवरेस्ट. ऑप्शन डी होइज बा राइट आंसर. नेक्स्ट, which is the largest freshwater lake in the world by surface area? Largest freshwater lake. Lake Superior.
Deck superior. Okay, deck superior. Next, question number 64. Which is the largest planet in our solar system? Largest planet in our solar system, Jupiter. Bruhaspati is the right answer. Which planet is a closest to sun? Closest to sun होची आपनकर Mercury. Mercury is the right answer. बुध ग्रह. Next, which is the hottest planet in our solar system? Hottest planet, Venus. Venus हबो कि शुक्र? Venus is the right answer. Next, who was the founder of Buddhism? Buddhism को किए प्रतिष्ठा करथिले? गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम. Option A is the right answer. Next, question number 68 try करंतु. Who was the 24th and last Tirthankar of Jainism? Mahavir Jaina. So आपनकर options अनुसार option B is the right answer. Lord Mahavir. Lord Mahavir is your right answer. What is the holy scripture of Sikhism? Sikh मानकर जो कौन है जो एटा Sikh मानकर जो कौन थे सेटा धर्मर गोटे पवित्र ग्रंथ बा धर्म ग्रंथ होची गुरु ग्रंथ साहिबा. Option C is the right answer. Next, question number 70. Which is considered the oldest of four Vedas? क्यों वेद? ऋग्वेद. ऋग्वेद is the right answer. Option B सबुठारु प्राचीनतम वेद अटे. Next, in which year battle of Buxar fought? बक्सार युद्ध क्यों मसिया होइतिला? 1764 रे बक्सार युद्ध. Next, who among the following was the founder of the Indian National Congress? Indian National Congress रो प्रतिष्ठाता Alan Octavian Hume. Option B is your right answer. Which Prime Minister of India gave the famous slogan Jai Jawan Jai Kisan? Lal Bahadur Shastri. Option C is the right answer. Next, who popularized revolutionary slogan Inqilab Zindabad? Inqilab Zindabad को इस स्लोगन टी को किए लोकप्रिय कराइथिले नारा टी को? Bhagat Singh. Option D is the right answer. Next, during the Quit India movement 1942 रे who gave the call do or die? करो या मरो. करो बा मरो महात्मा गांधी करो या एक कौन थिला? महात्मा गांधी करो बा मरो डाकरा देथिले. नेक्स्ट, तबले भारत छाड़ो आंदोलन 1942. नेक्स्ट, which prominent freedom fighter declared Swaraj is my birthright and I shall have it? बाल गंगाधर तिलक स्वराज मोर जन्मगत अधिकार एवं मु एहाकू हासिल करिबी बोली घोषणा करथिले. के करथिले? बाल गंगाधर तिलक. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77. Who founded आर्य समाज in 1875 रे कोंतु? आर्य समाज को किए प्रतिष्ठा करथिले? आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती प्रतिष्ठा करथिले. Option C is the right answer. Next, question number 78. Who established the Ramakrishna Mission in 1897 रे? रामकृष्ण मिशन को किए प्रतिष्ठा करथिले? 1897 रे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन को प्रतिष्ठा करिथिले. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79 ट्राई करिबा. द फेमस टाटा स्टील प्लांट टिस्को, द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया, इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? जामशेदपुर रे रहिछि. झारखंड रो जामशेदपुर रे रहिछि कोन टाटा स्टील प्लांट टिस्को. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सी पोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरल? केरल रे थिबा सी पोर्ट रो नाम कोन? कोच्चि. Option B is the right answer. Which is the highest mountain peak in South India? South दक्षिण भारत रो सबुठारु उच्चतम गिरिशृंग माउंटेन पीक होची अन्नामुडी. Option C is your right answer. Next, which is the longest river in the world? World रो longest river कोन हिजो? नाइल नदी. Option D is your right answer. What is the chemical name of baking soda? Baking soda रो chemical name कोन? NaHCO3. Sodium bicarbonate. Option A NaHCO3. Next, what is the chemical name of washing soda? Washing soda है जो आपनकर कार्बन डाइऑक्साइड. सॉरी, washing soda. washing soda ड्राई आइस टा होची कार्बन डाइऑक्साइड. ड्राई आइस होची कार्बन डाइऑक्साइड.
washing soda 84 Na2CO3 ठीक अच्छे सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन बी हो राइट आंसर तो यहाँ देखिले ड्राई आइस होची कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 ट्राई करंतु व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस रो रासायनिक नाम कोन कैल्शियम सल्फेट हबो कि और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हबो तो हेमीहाइड्रेटिंग हबो ना ऑप्शन डी हो राइट आंसर ओके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटिंग हबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर पावर एसआई यूनिट कोन हिजबो कोंतु what होची पावर एसआई यूनिट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होची फोर्स एसआई यूनिट नेक्स्ट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी जूल इज योर राइट आंसर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ओम इज योर राइट आंसर ऑप्शन डी हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स होचंती जॉर्ज मेंडल जॉर्ज मेंडल इज योर राइट आंसर who proposed theory of evolution by natural selection को नेकी चार्ल्स डार्विन ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 ट्राई करिवा who credited with the invention of the first practical telephone टेलीफोन को किए आविष्कार करथिले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से टेलीफोन को आविष्कार करथिले who is widely credited with the invention of the commercial जो लाइट बल्ब रो कथा कहबा लाइट बल्ब थॉमस एडिसन ऑप्शन डी थॉमस एडिसन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 who was the name of India's first artificial satellite launched in what was the name of India's first artificial satellite launched in 1975 रे आर्यभट्ट थिला मन रखंतु आर्यभट्ट होची भारतर प्रथम कृत्रिम उपग्रह नेक्स्ट हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू ट्रैवल टू स्पेस प्रथम भारतीय जे कि महाकाश को यात्रा करिसंती राकेश शर्मा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हेडक्वार्टर रहिछि बेंगलुरु रे नेक्स्ट सेमिति कोंतु डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रो हेडक्वार्टर केउंठरे रहिछि न्यू दिल्ली इज वो डीआरडीओ रो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इज योर राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 ट्राई करंतु इन व्हिच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन रो मुख्यालय रहिछि स्विट्जरलैंड रो जेनेवा ठारे ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 100 Where is the headquarter of the United Nations Organization UNO जाति संघ रो हेडक्वार्टर केउठारे रहिछि जाति संघ रो हेडक्वार्टर रहिछि न्यूयॉर्क रे न्यूयॉर्क इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 Who was the first Indian to win Academy Award Oscar प्रथमे पाइचंती ऑस्कार किए प्रथमे पाइचंती भानु आथाया से गोटे चलचित्र पाई प्रथम भावे ऑस्कार जीतिथिले होचंती प्रथम भारतीय ठीक कहूची एटा टिके देखिबे आपण ओके देन आपण कमेंट सेक्शन रे जणाइबे इफ आई एम रॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अब तो जानिचंती जवाहरलाल नेहरू रिसेंटली गोटे न्यूज रे मध्य थिला नरेंद्र मोदी राइट और जो करंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हबो कि और जवाहरलाल नेहरू तो आंसर हबो बट रिसेंट गोटे करंट अफेयर्स रिलेटेड गोटे न्यूज थिला लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भाबरे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखिबे टिके सर्च करिवे टिके एटा वेब रे कोन आसुची वर्तमान एटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी ऑप्शन बी प्रथम महिला प्रधानमंत्री नेक्स्ट इन व्हिच ईयर वाज आर्टिकल 370 ऑफिशियली रिवोक्ड
आर्टिकल 370 को उच्छेद करा दैथिला 2019 मसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 105 which is the smallest Indian state by geographically area रे गोवा क्षेत्रफल अनुसार भारतर क्षुद्रतम राज्य गोवा इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट which is the largest Indian state by geographical area रे बड़ राज्य विषय जदि कथा हवा जनसंख्या रे उत्तर प्रदेश हबो राजस्थान इज बड़ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 which is the most populous state in India as per 2011 रो सेंसस 2011 रो जनगणना अनुसार अधिक लोक संख्या उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए इज राइट आंसर। which is the least populous state in India least populous state which is Sikkim option B is your right answer। what is the official currency of Russia रो official currency कौन रूबेल होची रूसिया रो ऑफिशियल करेंसी रूबेल। नेक्स्ट व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम पाउंड ओके पाउंड स्टर्लिंग इज योर राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ चीन यूएन यूएन होची चीन रो ऑफिशियल करेंसी। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ साउथ कोरिया रे कोन हिजो साउथ कोरिया रो वॉन हिजो। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया रो डॉलर व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूएई रो कोन हिजो करेंसी मुद्रा कोन यूएई रो दिनार सॉरी दिनार नो यूएई रो हिजो आपनकर दिरहाम हबो कि दिरहाम हो हिजो यूएई रो दिरहाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ सऊदी अरब रो कोन हिजो रियल सऊदी अरब रो रियल ठीक अछि तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड इन इंडिया ता होजी आपनकर 1956 मसिया रे स्थापित होइतिला अप्सरा भारतर प्रथम परमाणु रिएक्टर ऑप्शन बी अप्सरा इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर भाभा मन रखंतु ऑप्शन सी से होचंती भारतीय परमाणु कार्यक्रम रो जनक। इन which year did India conduct its first nuclear test प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट 1974 मसिया होइतिला आपनकर जो राजस्थान रो गोटे स्थान पोखरान ठारे होइतिला भारतर प्रथम परमाणु परीक्षा ओके ठीक अछि ना एंड यार कोड नेम्ड स्माइलिंग बुद्ध थिला यार कोड नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 119 द पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट वर कंडक्टेड बाय इंडिया इन व्हिच ईयर पुनी थरे पोखरण 2 को 1998 मसिया रे पोखरण 2 अछि से शक्ति रो नामटा परमाणु परीक्षण होइतिला। नेक्स्ट which is the largest public sector bank in India State Bank of India SBI is your right answer State Bank of India। Next which was the first bank to established in India 1770 रे ता थिला बैंक ऑफ हिंदुस्तान ऑप्शन सी हो जो राइट आंसर प्रथम बैंक। नेक्स्ट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE एशिया रो गोटे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर कोंतु बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश करा दितला 1875। नेक्स्ट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 1992 रे प्रतिष्ठा करा दितला। नेक्स्ट द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर SEBI को केउ मसिया रे प्रतिष्ठा करा दितला 1988 मसिया रे SEBI रो प्रतिष्ठा हबो ठीक अछि। नेक्स्ट The Telecom Regulatory Authority of India TRAI was established in कोंतु TRAI को केउ मसिया रे प्रतिष्ठा करा दितला 1997 रे TRAI को प्रतिष्ठा करा दितला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 The Insurance Regulatory Development Authority of India IRDAI was constituted in which year सेमिति आपनकर IRDAI रो एस्टैब्लिशमेंट होची 1999 मसिया। The Pension Fund Regulatory and Development Authority
PFRD याकु प्रतिष्ठा करा जायतिला कोंतु याकु 2003 मसिया रे प्रतिष्ठा करा जायतिला मन रखंतु नेक्स्ट द कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया CCI was established in which year CCI मध्ये आपनकर 2003 मसिया रे प्रतिष्ठा नेक्स्ट द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया was established on which date 1950 मसिया 25 जनवरी आम भोटर डे सेलिब्रेट करंती 25 जनवरी 1950 इलेक्शन कमिशन को नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया के थिले प्रथम मुख्य इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया के थिले सुकुमार सेन थिले ऑप्शन डी होइज राइट आंसर नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रथम कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होजंती ई नरहरि राव स्वाधीन भारत प्रथम कैग नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किए अटंती MC सेतलाभार्ड MC सेतलाभार्ड थिले भारतर प्रथम अटॉर्नी जनरल नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया फर्स्ट चेयरमैन होचंती KC नियोगी नेक्स्ट आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ आर्टिकल 356 कोन प्रेसिडेंट रूल रो कथा कहल जाउछ ऑप्शन डी होइज राइट आंसर सेमिति आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ 368 होची अमेंडमेंट करिवार जो संशोधन करिवार प्रक्रियाटा नेक्स्ट आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत हे जो DPSP रो आर्टिकल 51 ए कोन फंडामेंटल ड्यूटी रो कथा कहबा आर्टिकल 51 ए आर्टिकल 280 कोन शीघ्र शीघ्र कहंतु आर्टिकल 280 होची फाइनेंस कमिशन अर्थ आयोग गठन आर्टिकल 324 कोन हिजो कहंतु आर्टिकल 324 वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 324 होची इलेक्शन कमिशन विषय कह जायछि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमिशन द फर्स्ट लोकसभा ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन व्हिच ईयर कहंतु 1952 मसिया हिजो राइट आंसर 1952 रे प्रथम साधारण निर्वाचन पर हमर लोकसभा गठित होइतिला नेक्स्ट a joint sitting of the parliament to resolve a deadlock on an ordinary bill is presided over by प्रश्न कोन कहूची प्रश्न कहूची संसद रो जो जुग्म बैठक रे लोकसभा रे के अध्यक्षता करंती वाचस्पति the speaker of lok sabha is your right answer option C is your right answer a money bill can only introduce in लोकसभा रे ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस करा जाय मन रखंतु आपनकर मिसलेनियस टॉपिक रु एमिति प्रश्न छि जाय पारे ऑप्शन डी होवर राइट आंसर नेक्स्ट द मैक्सिमम पॉसिबल गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज 6 मंथ रो गैप था 6 मास रो गैप पीरियड नेक्स्ट द quorum required to constitute a valid meeting of either house of parliament is कोन कोची प्रश्न क्वेश्चन नंबर 144 कोरम ठीक अछि कोरम माने संसद रो जो गृह रे बैठक पई कोरम जो मोट सदस्य संख्या रो 1/10 अंश इज राइट आंसर इट रिक्वायर्ड 1/10 of the total members option B is right answer the retirement age of the judge of the supreme court 65 year अवसर ग्रहण करंती सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति नेक्स्ट द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट विषय जदी कथा हवा ए होची हाई कोर्ट केते हिजबा आपनकर 62 इयर्स हाई कोर्ट रो 62 इयर्स सुप्रीम कोर्ट रो 60 इयर्स 65 इयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 the minimum age required to become a vice president of India same 35 years jaha president taha vice president what is the minimum age required to governor of state of India governor pai madhya apanakara 35 years ro minimum age the minimum age required to become a member of lok sabha pai apanakara 25 years ठीक अछि 25 years is right answer किंतु एटा ही जदी apanakara राज्य सभा pai आसी जिवो minimum age सेटा ही जो 30 वर्ष ऑप्शन D is your right answer ठीक अछि नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 151 ट्राई करंतु
Where is the headquarter of the World Bank located? World Bank रो headquarter केउंठारे रहिछि? Washington DC, District of Columbia रे रहिछि आपनकर Washington DC is your right answer. Next, where is the headquarter of the World Trade Organization? WTO रो headquarter केउंठारे रहिछि? WTO रो headquarter रहिछि Geneva, Switzerland रो Geneva. Next, where is the headquarter of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization? UNESCO रो headquarter केउंठारे रहिछि? UNESCO रो headquarter रहिछि फ्रांस रो पेरिस रे. Option C is your right answer. Where is the headquarter of the United Nations Children's Fund? UNICEF रो headquarter केउंठारे रहिछि? UNICEF रो headquarter रहिछि न्यूयॉर्क रे. Option D is your right answer. Next, सेमिति कोंतु इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रो मुख्यालय हेडक्वार्टर केउंठारे रहिछि? इंटरपोल रो हेडक्वार्टर रहिछि फ्रांस रो लियोन रे. लियोन इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड कोंतु? एमनेस्टी इंटरनेशनल रो हेडक्वार्टर रहिछि लंडन. ऑप्शन बी होइज योर राइट आंसर. लंडन इज लंडन. नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल लोकेटेड? ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर रही यार मुख्यालय केउठारे रही? दिस आपनकर नेदरलैंड रो कोन हिजो? आम्स्टरडम. ऑप्शन सी होइज राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 158 ट्राई करिवा. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ILO रो हेडक्वार्टर केउठारे रही? स्विट्जरलैंड रो जेनेवा इज राइट आंसर. नेक्स्ट, where is the headquarter of the South Asian Association for Regional Corporation? SAARC रो हेडक्वार्टर केउठारे रहिछि कोंतु? SAARC रो हेडक्वार्टर रहिछि नेपाल रो काठमांडू इज योर राइट आंसर. ऑप्शन ए, नेपाल रो काठमांडू रे SAARC रो हेडक्वार्टर. where is the headquarter of the Association of South East Asian Nation? एशियन रो हेडक्वार्टर केउठारे रहिछि? एशियन रो हेडक्वार्टर इंडोनेशिया रो जकार्ता. इंडोनेशिया रो जकार्ता रे रहिछि एशियन रो हेडक्वार्टर. नेक्स्ट, who is the author of the famous book The Discovery of India? The Discovery of India को किए यार ऑथर किए होतंती? जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट, Wings of Fire with Dr. APJ Abdul Kalam. देन यार को ऑथर किए थिले कोंतो? ई ऑटोग्राफी रो को ऑथर थिले अरुण तिवारी. ऑप्शन ए होइज राइट आंसर. Wings of Fire. नेक्स्ट, who wrote the Booker Prize winning novel The God of Small Things? अरुंधति रो यार लेखक God of Small Things. Who is the author of the historical novel Train to Pakistan? Train to Pakistan को किए लिखिथिले? खुशवंत सिंह लिखिथिले Train to Pakistan. Next, who wrote the magical realism novel Midnight Children? Midnight Children रो लेखक किए? सलमान रशीद. ऑप्शन सी ठीक हबो? Salman Rushdie is your right answer. Next, question number 166. For which literary work did Rabindranath Tagore win Nobel Prize in Literature? 1913 मसीह रविंद्रनाथ टागोर को नोबेल पुरस्कार रे सम्मानित करा दितला साहित्य क्षेत्र रे. गीतांजलि पई ए पुरस्कार टी पाइथिले. गीतांजलि ठीक अछि तांकर गोटे काव्य बा जो ग्रंथ को नेकी. नेक्स्ट, who wrote economic critic book Poverty and Un-British Rule in India? दादा भाई नारोजी याको रचना करथिले. ड्रेन थ्योरी को मध्य डेवलप करथिले. ठीक माने प्रदान करथिले. Who is the author of the historical account India Wins Freedom रो लेखक के कोंतु? India Wins Freedom रो लेखक होचंती मौलाना अबुल कलाम आजाद. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, who wrote the autobiography The Story of My Experiments with Truth? Experiment with Truth महात्मा गांधी मन रखंतु. Who wrote the main Booker Prize winning novel The White Tiger? The White Tiger रो लेखक के? White Tiger जो उपन्यास को लिखिचंती अरविंद आडिगा. ऑप्शन सी होइज राइट आंसर. नेक्स्ट, द रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट सहित रणजी ट्रॉफी जड़ित अटे. डुरांड कप कहा सहित जड़ित अटे? डुरांड कप आपनकर फुटबॉल हिजबो कि फुटबॉल सहित जड़ित अटे. नेक्स्ट, थॉमस कप कहा सहित जड़ित अटे कोंतु? थॉमस कप बैडमिंटन हिजबो. थॉमस कप बैडमिंटन. डेविस कप कहा सहित जड़ित अटे कोंतु? डेविस कप हिजबो टेनिस. टेनिस इज राइट आंसर. ओके, राइडर कप प्रेस्टिजियस ट्रॉफी गोटे एसोसिएटेड विथ राइडर कप विषय जदि कथा बा गोल्फ सहित जड़ित अटे राइडर कप. नेक्स्ट,
सेमिति सुल्तान अजलन शाह कप is an international tournament associated with which sport? Sultan Azlan Shah Cup. Which option is it? Hockey is the right answer. सेमिति हॉपमैन कप is associated with which sports? कहा सहित जड़ित अटे हॉपमैन कप. हॉपमैन होची हॉकी ही हबो. हॉकी नो हॉपमैन होची आपनकर हॉपमैन होची टेनिस. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट आगा खान कप is associated with which sports? आगा खान कप. आगा खान कप ट्राई करिवा. फुटबॉल और हॉकी. हॉकी इज योर राइट आंसर. संतोष ट्रॉफी इज एन एटा होची गोटे नेशनल लेवल टूर्नामेंट एसोसिएटेड विथ संतोष ट्रॉफी आपनकर फुटबॉल क्षेत्र रे ही खेला जाय. फुटबॉल इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट Saeed Mushtaq Ali Trophy is associated with Saeed Mushtaq Ali Trophy. This is cricket. Cricket ro gote T20 format. Next on which date World Environment Day celebrated globally? June मास 5 तारिख World Environment Day. सेमिति Earth Day को हम सेलिब्रेट करंती अप्रैल 22 तारिख Earth Day. International Yoga Day जून 21 तारिख. ठीक अछि. वर्ल्ड ओजोन डे कहतु विश्व जो ओजोन सुरक्षा दिवस पालन करा जाय सेप्टेम्बर 16 तारिख. नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर डे वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्च 22 तारिख होची आपनकर वर्ल्ड वाटर डे. ह्यूमन राइट्स डे केउ दिन सेलिब्रेट करंती हमें 186 ह्यूमन राइट्स डे हिजबो आपनकर डिसेंबर 10 तारिख. ओके नेशनल साइंस डे हमें को दिन सेलिब्रेट करंती फेब्रुआरी 28 तारिख को नेशनल साइंस डे भाबरे सेलिब्रेट करंती. नेक्स्ट on which date World Health Day celebrated? World Health Day को सेलिब्रेट करा जाय विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रैल मास 7 तारिख. World Wildlife Day celebrated ट्राई करंतु World Wildlife Day celebrated मार्च 3 तारिख World Wildlife Day. नेक्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे मार्च मास 8 तारिख होची इंटरनेशनल वुमेन्स डे. हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट? हॉर्नबिल आपनकर मिजोरम Nagaland is your right answer. The famous harvest festival Pongal is primarily celebrated in which Indian state? Pongal को celebrate करा जाए तमिलनाडु. Next, the famous harvesting festival Onam is primarily celebrated in Onam आपनकर कोन हिजो Onam टा केरल is your right answer. The famous harvest festival Baisakhi is primarily celebrated in Baisakhi विषय कथा बा पंजाब is your right answer. Which is the largest river island in the world? Majuli. India ro Brahmaputra nadi Assam re roichi Majuli. Next, which is the highest dam in India? Tehri Dam. Bhagirathi nadi re roichi. Which is the longest national highway? Longest national highway विषय जदि कथा बा NH44 श्रीनगर ru Kanyakumari. Next, which is the highest civilian award of Republic of India? Bharata Ratna is your right answer. Next, who was the first Indian citizen to awarded Nobel Prize? प्रथम Nobel Prize किए पाइथिले? रविंद्रनाथ टैगोर. ऑप्शन बी was your right answer. Who was the first Indian woman to win an Olympic medal? महिला से होचंती कर्णम मालेश्वरी. कर्णम मालेश्वरी 2000 रे सिडनी रे जो ओलंपिक्स होइथिबो भार उत्तोलन क्षेत्र रे कर्णम मालेश्वरी प्रथम भारतीय महिला भाबरे ओलंपिक पदक सेते बेले से आई थिंक ब्रोंज बोधे जीतिथिले. राइट. ऑप्शन बी होइछ राइट आंसर. क्लियर. तो हेतला किछि आपनकर मिक्स्ड पैटर्न रो बेस्ड ऑन सिलेबस को नेकी प्रश्न आउट ऑफ 200 आपण केतोटी प्रश्न करि परछन्ती आपण कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे. एवं आपण ए पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रो डाउनलोड करि परिबे. क्लास को बहु मात्रा रे लाइक एंड शेयर करंतु. ओके एंड एही चैनल रो जॉइन बटन रे आपण जॉइन करि मध्य सपोर्ट करि परिबे. आई होप ए क्लास टी आपण मानक पई बहुत यूजफुल हबो. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास.